देखा जाए ना तो लाइफ में ना बड़ी एंजाइटी होती है, बड़ा स्ट्रेस होता है। कॉमन चीज है लाइफ में, चाहे आप काम पे जाओ, रिलेशनशिप्स के साथ, घर पे, इवन स्मार्टफोन्स के साथ। अब बाकी एंजाइटी के सोल्यूशन मेरे पास नहीं, बट आई कैन टेक केयर ऑफ वन, आपके स्मार्टफोन ओनरशिप की एंजाइटी। द आंसर इज टू बाय अ फोन दैट नेवर गिव्स अप ऑन यू, अ फोन दैट विल लास्ट यू इनटू द फ्यूचर, दैट विल नॉट फोर्स यू टू बाय अ न्यू फोन विद इन अ फ्यू मंथ्स। और ओप्पो कह रहा है कि उनका ये जो नया F23 5G है, दैट कैन मेक इट हैपन। ओप्पो वांट्स टू एंड योर नोमोफोबिया, द एंड ऑफ फियर ऑफ स्टेइंग अवे from your smartphone। एक फोन, just one Oppo F23 का ये कर सकता है। Let's find out in my review। शुरू करेंगे with some of the biggest things in। First one is the battery। 5000 mAh की बैटरी inside this device at just 8.2 mm thick, 67 watt fast charger भी है। But what makes this very very special is the Oppo battery health engine। Oppo F23 की बैटरी engine जो है extends battery lifespan by monitoring the battery status, control करता है charging current को, voltage को, and supports 1600 charge cycles, which means आपकी बैटरी is good for 4 to 5 years in terms of charging। 18 मिनट चार्ज करो, 50% charge, which is good enough to go through a normal day's use very very easy। यानी कि बैटरी एंजाइटी for the next 3 to 4 years or even more than 4 years I have solved। चलते हैं towards anxiety number 2, परफॉर्मेंस। क्या आपका फोन एक्चुअली विल इट कीप गोइंग फॉर 4 years? इसमें उन्होंने दिया स्नैपड्रैगन का 695 चिपसेट, व्हिच इज 5G रेडी चिपसेट, सो दैट्स कवर्ड। टर्म्स ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फोन एब्सोल्युटली फ्लाइज। हमने अपना नॉर्मल जो गेमिंग राउंड्स करते हैं, टॉर्चर टेस्ट करते हैं, वो किया। वाज एबल टू मेंटेन कंसिस्टेंट फ्रेम रेट थ्रू आउट आवर सेशंस। वी ट्राइड अदर गेम्स आल्सो, गॉट द सेम रिजल्ट। देन वी वेंट टू आवर नेक्स्ट टेस्ट। हमने ओपन किए मल्टीपल एप्स, स्विच बिटवीन ईच ऑफ देम, छोटे मोटे नहीं, 20-30 एप्स, सीमलेस, स्मूथ, एकदम मक्खन टाइप का हम लोग को ऑपरेशन मिला। फिर हम लोग खोले बहुत सारे गूगल क्रोम टैब्स। ये ना एक फोन के लिए बहुत टॉर्चरस होता है बिकॉज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इट नीड्स। फोन स्टूड इट्स ग्राउंड फर्मली। क्या परफॉर्मेंस है इस फोन की, मजा आ गया। वी डिड अ हार्डकोर टेस्टिंग फॉर अ सॉलिड 1 hour and observed 2 things। कोई थ्रॉटलिंग नहीं आई परफॉर्मेंस में, इट डजंट स्टटर एंड नो हीटिंग इवन ड्यूरिंग लॉन्ग गेमिंग सेशंस। यानी कि एक और एंजाइटी मैं आपकी कम कर रहा हूं, लेकिन अभी और है। इट कम्स विद 8 GB RAM इनबिल्ट एंड यू कैन डबल इट टू 16 GB RAM expansion inside the phone। It ticks the box for incredible performance। एक और एंजाइटी गई, this will easily perform for you for the next 4 years। Next, software updates। देखिए, you do need updates for your phone, otherwise they get outdated before you can even say their name, and it also makes your phone very very insecure। Thankfully ये प्रॉब्लम आपको Oppo F23 5G में नहीं आएगी। First of all, Android 13 out of the box आपको मिल रहा है। फिर Oppo आपको प्रॉमिस कर रहा है 4 years of operating system updates। They're all set till Android 17 with ease। फिर 5 साल के security patches, which means Oppo आपको एक और साल, यानी कि Android 17 पे आप जरूर होगे, लेकिन आपको सिक्योरिटी फिक्सेस मिलेंगे फॉर 1 more year, यानी कि 4 to 5 year लाइफ चेक। अब डिजाइन देखिए, a thing that I usually do in the beginning, but today there were very very pressing matters। आपकी एंजाइटी कम करनी थी। Let's talk about the design of this phone। वो लगता है कि 4 साल बाद you will still like the design of this phone। Will it actually last? देखिए, weight है इसका about 192 grams, so nice and comfortable, good feel also। It's very glowy, very shiny to look at। Color we've got is called bold gold। है बड़ा से bold gold, right? Back surface doesn't pick up any fingerprints, so that is very very awesome। और इसके जो flat rails around हैं, that also are good। इसमें कोई ज्यादा स्क्रैचेस भी नहीं आ रहे। We've been trying it out, so that all works out। If you're daring enough, you can make it stand on its own also। इसको हम लोग यहाँ पे खड़ा कर दें, देखा, डन। केस बॉक्स में उन्होंने दिया हुआ है, कैमरा प्लेसमेंट इज इनसाइड दिस डेकोरेटिव रिंग, सो इसके स्क्रैचेस आपको नहीं पड़ेंगे। न्यू डिजाइन है फ्रॉम ओप्पो, जो मेक्स द F23 रियली स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, सो आई थिंक this design is good enough to last quite a few years। Display, 4 साल बाद तो पता नहीं क्या क्या डिस्प्ले आ जाएंगे, राइट? Actually speaking, this should last। 6.72 इंच का लार्ज स्क्रीन है और FHD प्लस रेजोल्यूशन है। 120 Hz रिफ्रेश रेट ऑलरेडी है at this price point। The panel is nice and vibrant। Movies, web series, games, even wallpapers look great on this phone। 680 nits of peak brightness, which is very impressive both indoor and outdoor। लेकिन अब चलते हैं towards the part that you say, यार ये तो ना कैमरा टेक्नोलॉजी तो कहीं और ही पहुंच जाएगी 4 साल में। Let's see। Triple camera at the back with a 64 megapixel main lens, 2 megapixel depth camera and another 2 megapixel micro lens। Camera performance is very very impressive right now। Daytime shots taken from this phone look fantastic। Images are rich, vibrant, nice depth। Shadows are not blown out of proportion। Dynamic range is very very well
balance. Real magic we found was in the night shots. Ultra night mode जो है works wonders, allows you to take crystal clear photos even in dim surroundings. And who can forget about Oppo's microscopic camera? इसका जो 2 megapixel micro lens है shines quite literally. Digital zoom जो has been improved from 15/30x now to 20x and 40x. So you can get those very cool microscopic shots of everyday things and make yourself look the coolest photographer in the room. तो अब बताइए conclusion में हम लोग क्या बात कर सकते हैं, थोड़ी डिस्कशन करते हैं. Oppo claim करता है to solve our smartphone anxiety, stress and problems for 4 years. And I definitely see that happening क्योंकि Oppo ने बहुत ही अलग टाइप का फोन बनाया है. Everything seems to be ready for now and the future. Great performance, great battery, promise of future updates, software, impressive design, superb camera, all of it seems to be working out well at a very affordable price. Kind of makes it hard to say no to this phone. What do you think? Comment below and keep coming back to me on Tech Magnified and see you in the next one. इसका ना रिव्यू करेंगे, कहते हैं ना लॉन्ग टर्म रिव्यू, इसका रिव्यू करेंगे 2027 में.